Jai Hind students. So today I am starting with question number 6. So that the first part is this कि any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5, and the part B is कि prove that any positive even integer is of the form 6q plus 2 or 6q plus 4. 6q plus 4. Is it there? So just look at the solution. If for given integer a and b is equal to 6, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 6q plus 1, 6q plus 3, यहाँ से b की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम 6. तो फॉर गिवन इंटीजर a एंड b इज इक्वल टू 6, यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे b की जगह कितना है 6q प्लस आर, वेयर r is greater than equal to 0 or less than b, that is less than 6. यानी 0 is less than equal to r less than 6. Now when r is equal to 0, then a will become 6q plus 0, that is 6q. तो इसको मैंने क्या ले लिया a1. When r is equal to 1, then a2 will be written as 6q plus 1. When this is r is equal to 2, then 6q plus 2, then 6q plus 3, then when r is equal to 4, 6q plus 4, when r is equal to 5, that is 6q plus 5, 6q plus 5. तो क्या है when r is equal to 0, then the a is coming 6q, so I am writing there a1. When r is equal to 1, a2 is equal to 6q plus 1. When r is equal to 2, then a3 is 6q plus 2. When r is equal to 3, then a4 becomes 6q plus 3. When r is equal to 4, then a5 will become 6q plus 4, and when r is equal to 5, then a is equal to 6q plus 5. Therefore, we can write that every positive integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q, 4 और 6q plus 5. तो इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q, 6q plus 1 डैश 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 अप टू 6q plus 5. तो एक क्वेश्चन तो जैसे इसमें ये क्या है आपका हिडन है इन दिस क्वेश्चन. नाउ फॉर द पार्ट ए क्या लेना है मैंने कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5. तो नाउ जस्ट लुक हियर 6q plus 1. तो जस्ट लुक हियर दिस 6q plus 1, वी कैन राइट दिस 2 into 3q और plus 1, and this can be written 2m plus 1 type, where m is how much? What is m here? 3q. 2m plus 1, that is multiple of 2 plus 1. 2m means multiple of 2 plus 1. Multiple of 2 plus 1, that is an odd number. It means 6q plus 1 is an odd number. Again I am taking 6q plus 3. This 6q plus 3 can be broken as 6q plus 2 plus 1. Now just look here, what is common in these two? That is 2. So what is left here? 3q plus 1 plus 1. Again it is of the type what? 2 into m plus 1. यहाँ पे m कितना है आपका 3q plus 1. Again this 6q plus 3 is of the type 2m plus 1. 2m plus 1. So that is also
an odd number. Therefore 6q plus 3 is also an odd number. Now 6q plus 5. This 6q plus 5 can be written as 6q plus 4 plus 1. What is common in these two? 2 is again common. So what you will have? 2 into 3q plus 2 and plus 1 plus 1. So again this is of the type 2 into m plus 1, where m is how much? 3q plus 2. 3q plus 2. So therefore 6q plus 5 is also an odd number. So in this way we can prove that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5. तो इन तीनों से क्या कर रिजल्ट निकाल सकता हूं मैं? Therefore any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5. इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो किस फॉर्म का होता है? 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5. नाउ जस्ट लुक एट द पार्ट बी कि एवरी positive even integer is of the form 6q, 6q plus 2 or 6q plus 4. Now this 6q can be written as 2 into 3q, which is of the type 2m, yani multiple of 2. Multiple of 2, it means 6q is an even number, and this 6q plus 2, 6q plus 2, this can be written as 2 into 3q plus 1, but again it is of the type 2 into m, where m is how much? This one 3q plus 1, 3q plus 1. Does it means? It means 6q plus 2 is also an even numbers. And now 6q plus 4, this can be written as 2 into 3q plus 2. This is also of the time 2m. ये अगेन किस टाइप का है? 2 into m, यानी मल्टीपल ऑफ m, 2. तो वेर m इज हाउ मच? 3q plus 2, 3q plus 2. ये भी क्या हो गया आपका? मल्टीपल ऑफ 2. तो देयरफॉर 6q plus 4 is an even number, even number. Okay, this is an even number. अब इन तीनों से क्या रिजल्ट मिल जाएगा मेरे पास? जस्ट लुक हियर, दिस CQ that is multiple of 2, even number, 6q plus 2, again multiple of 2, 2m, 6q plus 4, again 2m, the multiple of 2, it means all these are even integers. Therefore any positive integers is
of the form 6q plus 2 or 6q plus 4, 6q plus 4. So in this way we can prove that every positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5, and every positive integer is of the form 6q plus 2 or 6q plus 4. Is it okay? One more theorem, that is fundamental theorem of arithmetic. क्या है fundamental theorem of arithmetic? कि every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. What is the statement of this theorem? कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को उसको हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है यूनिक होता है इस चीज़ से हटते हुए कि वो जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो किस ऑर्डर में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1771, दिस इज ए कंपोजिट नंबर, व्हेन वी विल फैक्टराइज दिस वी विल गेट 7 into 11 into 23। वो कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, यानी इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने 1771 को एक्सप्रेस कर दिया। और वो कहता है कि दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इस चीज से हटते हुए कि ये जो प्राइम फैक्टर जो है इनका ऑर्डर जो है चेंज हो जाए, ये कि चाहे ऐसा हो जाए 11 into 23 into 7, या फिर ये ऐसा हो जाए 23 into 7 into 11। तो क्या है कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। जस्ट लुक एट द फैक्टर्स, 11 इज हियर, 23 इज हियर, 7 इज हियर, तीनों यहाँ पे हैं, तीनों यहाँ पे हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ओके, नाउ वी आर टेकिंग दिस प्रॉब्लम कि एक्सप्रेस 8232 as a product of its prime factors. So just look here, this is the number 8232, start with 2, when we will divide you will get 4116, again with 4 2058, again with 2 1029, then with 3 you will get 343, then 7 to 49, then 7 7 and 7 1. Therefore this 8232 can be written as 2 into 2 into 2 into 3 into 7 into 7 into 7, that is 8232 is equal to 2 power 1 2 3 into 3 into 7 power 3. Okay, so this is the expression of 8232 as a product of its prime factors. Now this is the question number 8, you find the LCM and HCF of 26 and 91 and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. So now just look at the solution. मेरा पहला नंबर है 26 और दूसरा नंबर है मेरा 91। अब मैं क्या करूंगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं। तो जस्ट लुक एट 26, this 26 can be written as 2 into 13, 2 into 13, and this 91 can be written as 7 into 13, 7 into 13। ठीक है, पहले तो इनका जो है फैक्टराइजेशन कर दिया। अब एचसीएफ और एचसीएफ निकालने के लिए जस्ट लुक हियर, मैंने इन दोनों फैक्टराइजेशन को चेक किया और इसमें देखा क्या क्या नंबर है। तो इसमें देखो एक तो क्या है 2 है, एक इसमें 7 है और एक इसमें 13 है। दोनों में चेक किया। सपोज करो इसमें देखिए 2 and 13 है, इसमें 7 and 13, दोनों को कंबाइन कर दिया तो मेरे को क्या क्या मिला कि दोनों में कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व हैं। 2 है, 7 है, 13 है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए।
और ऐसे मैं इसके आगे भी लिख दूंगा 2 into 7 into 13. इज इट देयर? नाउ जस्ट लुक हियर, 2 इसमें कितनी बार है? 1 टाइम्स. 7 is not here, no. 13 is here, yes, 1 time. Similarly here 2 is 2 नहीं है, 7 is 1 time and 13 is also 1 time. Is it okay? Now for SCF, what we will write? We will again write these numbers 2 into 7 into 13 and we will take the minimum power of these numbers, lowest power of these numbers. कौन सी पावर? लोएस्ट. तो देखिए 2 की पावर इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो व्हाट वी विल राइट? 0. इसमें 7 की पावर 0 है, इसमें 7 की पावर 1 है, तो कम वाली कौन सी है? 0. और इसमें 13 की पावर दोनों में क्या है? 1 है, यानी मिनिमम कितना है? 1 ही है. तो इट मीन्स 2 power 0 is 1, 7 power 0 is 1 and 13 power 0 is 1 is 13. So therefore its SCF is 13. SCF is 13. Now for LCM. Now for LCM, again we will write these numbers 2 into 7 into 13 and we will take the highest power. So just look here, what is the highest power? 2, 1 or 0? 1. 7 highest power is again 1 and 13 highest power is again 1. Is it there? 7 highest power is 1, 2 power 1 is 2 into 7 into 13. तो कितना हो गया? 13 7 90 182. So what is the LCM of these two numbers? 182. Now come to the verification, LCM into SCF. Now verification. Just take the left hand side. What is our left hand side? LCM into SCF. So that is what? LCM any 182 into SCF is 13. So just multiply them. 13 to the 26, 104, 6 and this is 236. यानी 2366 and just look at the right hand side. What are the numbers? 26 and 91. 26 and 91. When you will multiply them, again you will get 2366. 2366. Therefore, this is the verification. Therefore, LCM into SCF is equal to product of the two numbers. Is it okay? अगर यहाँ पे 3 नंबर गिवन होते कि फाइंड द LCM and SCF of 3 numbers and then verify this, तब क्या होता है? उस कंडीशन में ये वाला वेरिफिकेशन सही नहीं होता है. ओके. नाउ we have next this question number 9. Question number 9 is this. Find the LCM and SCF of the following integers by applying prime factorization method. Using fundamental theorem of arithmetic, यानी FTA, or using prime
factorization method find the LCM and HCF of the numbers. The numbers are given there. You can take anyone. That one 12, 15 and 21. 12, 15 and 21. क्या है? Using FTA, that is fundamental theorem of arithmetic, or prime factorization method, find the LCM and HCF of the numbers 12, 15 and 21. So now just look at the solution. सबसे पहले we will write this 12. The prime factorization of 12 is 2 into 2 into 3. Again we have 15. This can be written as 3 into 5. Again is 21. This 21 can be written as 3 into 7. 3 into 7. अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह मैं चेक कर लूँगा कि फैक्टराइजेशन में कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व हैं। तो जस्ट लुक हियर, इन सब में तीनों में देखिए क्या क्या नंबर इन्वॉल्व है। एक तो इसमें 2 है, एक इसमें 3 है, एक इसमें 5 है और एक इसमें 7 है। बस यही नंबर है सब में, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7. Is it there? Now just check how many times is 2 here. 1, 1, 2 times. 3 is 1 time. 5 is not here, therefore power is 0. 7 is not here, power is 0. Again here only 3 and 5 are here. 2 is not here, it means 2 power 0, 3 power 1, 5 power 1, 7 power 0. Again in this question 3 and 7 are there, so 2 is not there, 3 power 1, 5 power 0 and again 7 power 1. 7 power 1. Now LCM. LCM of these numbers, I will write again these numbers again, 2, 3, 5 into 7. What is the highest power of 2? Just look here, that is 2. 3, what is the highest power of 3? That is 1. Only 1 is power there. Just look at the 5. 5 power is 1. Highest power is 1. Or 7 highest power is 1. So now just look here. 2 power 2 is 4 into 5. 3 power 1 is 3. 5 power 1 is 5. 7 power 1 is 7. When you will multiply 4 3 is 12, 5 is 60, 7 is 420. 420 is the LCM. Now for SCF, just look at the SCF. We will write again 2, 3, 5, 7. What is the least power of 2? Lowest power of 2, that is 0. 3 lowest power is 1. 5 is 0 and 7 is 0. Every number power 0 is 1. Therefore 2 power 0 is 1. 3 power 1 is 3. 5 power 0 is 1, 7 power 0 is 1, again this is. So what is the SCF? What is the SCF? 3. And what is the LCM? 420. 420. Now this is question number 10. Given that SCF 306, 657 is 9. यानी आपको गिवन है 306 और 657 का SCF कितना गिवन है आपको? 9. क्वेश्चन इज दिस कि फाइंड LCM 306, 657. आपने क्या है इन दोनों का यानी 306 और 657 का LCM फाइंड आउट करना है. तो जस्ट लुक हियर, मीन्स LCM into SCF is equal to product of the two numbers. Therefore LCM into 9 is equal to
Look at these two numbers, 306 into 657. Therefore LCM will be 306 into 657. 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, here it will divide. This will come 9 3 जा 27, yes, 34 into 605 7. कितना हो जाएगा ये? 34 into 657. When you will multiply them, you will get 22338. So that's all for today. Thank you very much.